just three things to say before Nilavai starts. First is about Antardhwani, because Nilavai is the first time he's joining us. So Nilay Mehta is a gastroenterologist, a very famous one from Ahmedabad, Gujarat, India, and he's in Zydus now. હું સપન પંડ્યા રોમેટોલોજિસ્ટ તમે ઓળખો છો. નીલવી हमारे gastroenterologist है. He will be talking today. Now, three things I want to say. One is about Antardhwani. Nilevi, it is a group, because since you are the first time coming here, Antardhwani is a ankylosing spondylitis support group of patients, and it is the only one in India, and one of the few support groups which is working very professionally, as I said. So हम लोग ये हर महीने करीब करीब every 15 days, अभी तो almost 15 days से continuously we had these symposia, जिसमें various drugs के बारे में बात की, ankylosing disease के बारे में बात की, and we also had a yoga specialist come and talk to us, and then I think further down the line we also have eye specialists and different specialists coming and talking. So Antardhwani is that support group. This is for introduction to Nilay. I had told him, but the second thing is about ankylosing spondylitis. So most of these, मेरे हिसाब से ankylosing spondylitis, spondyloarthritis disease वाले पेशेंट होंगे. तो जैसा कि पहले भी बात हुई है, आप लोग सब जानते होंगे कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस बेसिकली इज एक तरह का आर्थराइटिस है जो छोटी उम्र में मेल्स को में ज्यादा देखा जाता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है. एंकिलोजिंग इज मोर कॉमन इन मेल्स. और उसमें पैर के जोड़, बटक के जॉइंट्स, हिप्स के जॉइंट्स, स्पाइन, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. और धीरे धीरे जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वो सबसे सिवियर फॉर्म है, जिसमें आदमी आगे की तरफ थोड़ा झुक जाता है. सब नहीं झुकते, लेकिन काफी मरीज ऐसे होते हैं जो झुक जाते हैं. तो उसका जल्दी से डायग्नोसिस करना और ठीक करो तो ये हम इसको थोड़ा रोक सकते हैं. आइडिया इस दवाई का ये होता है. अब ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस स्पेक्ट्रम में है, जिसमें और बीमारियां भी साथ में होती है. इसमें चूंकि ये खून की बीमारियां होती है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आई में प्रॉब्लम हो सकता है जिसको मेरिडोसाइक्लिटिस कहते हैं, मुंह में छाले वगैरह पड़ते हैं, चमड़ी की बीमारी एक सोरायसिस देखी जाती है जिसके साथ भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है. तो ये सारे एक ही कुटुंब के सॉर्ट ऑफ डिजीज है. और उसमें एक आंतों में भी प्रॉब्लम इसमें हो सकता है जिसको हम कोलाइटिस या क्रॉन्स कहते हैं, जिसके बारे में नीलवी आज आपको बात करेंगे. तो दैट इज सो दैट कमिंग टू द नंबर 3 इज के since bowels or intestines are a part of this disease spectrum, and of course then you have problems of this kind of acidity with taking these kind of tablets, जो आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसके बारे में भी होंगे. लेकिन मेन जो नीलवाई का रोल है, ये जो आंतों की बीमारी, इसमें कई बार पता नहीं लगता है मरीजों को भी, और अगर डॉक्टर्स अवेयर नहीं है तो उनको भी आइडिया नहीं आता है. तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे. तो इसलिए नाउ आई हैंड ओवर द to Nilay to talk about inflammatory bowel disease, IBD, in our diseases. Thank you. So basically, inflammatory bowel disorder, I'm going to speak on, of course, you would be knowing because ankylosing spondylosis is a disease of life and you must have gone through the entire thing in detail. But I'll just point out certain aspects of this disease. Basically, as the name suggests, it's an inflammatory disease involving the bowel. And we know that could be small bowel, or there are two types of inflammatory bowel disorder. One is ulcerative colitis and the other one is Crohn's disease. Both the diseases would cause ulcers or swelling in the small, in the intestine. Ulcerative colitis causes, or it involves just the large intestine to anus, so it can involve mouth, small intestine, large intestine, anything. And it has, as we call it, as intestinal and extra-intestinal manifestation. So whenever a person has just the intestinal involvement, we call it as an intestinal disease. But these patients, they have a systemic disease, meaning what Dr. Sapan told us, that ankylosing spond can involve so many things, like eye, mouth. So basically all these are related disorders. In inflammatory bowel disorder, one can have involvement of eye, one can have involvement of mouth, where one can have ulcers, one can have involvement of skin, where we get like rashes over the skin. Also liver is involved, in which patient gets jaundice, which we call as primary sclerosing cholangitis. So whenever these patients have the disease, how do they come to us? What are the problems what a patient would have? Like, most importantly, these patients most of the times will have diarrhea. And this diarrhea many a times contains blood. If
if it is ulcerative colitis, and I told you ulcerative colitis it involves only the large intestine, large bowel. It does not involve the small intestine. But whenever a person has ulcerative colitis, patient will have diarrhea with blood, and also these patients will have some pus and mucus, and that's why these patients will complain of diarrhea which are small in volume, which could be anything from 1 to 10 or even more, will have blood, mucus, pus, so whitish thing will come, and this patient may have fever or pain in the tummy, and all these are because of inflammation in the small bowel. Crohn's disease again will have diarrhea, but many a times they are non-bloody diarrhea, so they just have diarrhea but no blood. Why is that? Because when Crohn's disease involves small intestine, they many a times don't get blood in the stools. They also, Crohn's disease is a different disease than Crohn's disease, even though it's like a brother to ulcerative colitis, because ulcerative colitis is very superficial disease, meaning that even though it's a large bowel involvement, only the superficial part, the inner part of the intestine is involved. So the complications are not many. But in case of Crohn's disease, it's a transmural disease, means it involves the entire thickness of the intestine. And that's why it can cause something called fistula, where one intestine joins the other intestine, or intestine opens up into the skin, or intestine opens up into the area which we call as perineal. So all this fistula, or sometimes they have stricture, meaning that the small bowel or large bowel becomes narrow. So Crohn's have many problems, while ulcerative colitis will have mainly diarrhea. And I'm not going right now touching the extra-intestinal manifestations. And joint part, of course, Dr. Sapan will tell you what exactly happens. Sometimes patients do not have this diarrhea. They just come to us or go to doctor with anemia. They feel fatigue, they feel breathless, they are not well, and they go to doctor, and then their hemoglobin is done and it comes low. They don't have diarrhea, just the hemoglobin low. And why it happens? Because they have ulcers in the intestine and they lose blood from the intestine, but still it is not so much to manifest with diarrhea. Sometimes these patients do not have diarrhea, they do not have anemia, they have just fever. So they come to us with prolonged fever, like 1 month, 2 months, and this is typically low-grade fever. They have fever of 9900, and so this is another presentation. And many a times, these patients, they just come with joint pain, and this is the case scenario where the patient would go to Dr. Sapan first, and then the patient comes to me from Sapan saying that, okay, I think that this patient has joint involvement because of inflammatory bowel disorder. So why don't you just put a scope and then see if they have ulcers? And then I do an colonoscopy or endoscopy. I do find ulcers, and then we make a diagnosis of inflammatory bowel disorder. So this is how the patient comes to us. Now, how do we diagnose of the as well as non-intestinal disease? But then also we do blood test. And what we do blood test is mainly hemoglobin, but also proteins, SGPT. So baseline blood workup is done. But what is most important to colonoscopy, because these inflammatory bowel disorders, they involve large intestine the most. So we do most of the time colonoscopy. And colonoscopy is an investigation where we see large intestine as well as we see last part of the small intestine. But if we suspect that the disease has involved stomach or the early part of the intestine, then we do upper GI endoscopy, meaning we put an endoscope from the mouth. And now we have endoscopic examination where it is called enteroscopy. We can see even the small intestine. Till now, we were not able to see the middle part of the intestine. And you know that small intestine is 22 feet long, and no normal scope, we can see everything. But with this scope, we can see even the middle part of the intestine. Sometimes we have to do something called capsule endoscopy, where a capsule is given to the patient. It's just like a medical capsule, but it has camera.
So when it is traversing through the colon or the intestine, you see whether this patient has disease or not. So once we see this disease, we make diagnosis, and then we start treatment. And what sort of treatment? They are anti-inflammatory treatment. It could be oral drugs or it could be IV drugs. So in oral drug, we give something called mesalamine or 5-aminosalicylic acid. And many a times this kind of drugs are also given in ankylosing spondylosis with some inflammation, because basically they are anti-inflammatory drugs. These drugs, they have several formulations. They are of different types, but they have the same drug. Why these different types are there? Because they have a different mechanism by which the drug is dispersed into a particular part of small intestine or a large intestine. Why it is important? Because these drugs have to go to the place where the ulcers are, where the disease is, and then they'll act locally. And that's why there are different types of medications. So don't worry about it. Don't get confused. If someone is taking some drug, the other one is taking the other drug. At the end of the day, they all are same drug. But if the disease is too much, we have to give more potent anti-inflammatory drugs, and they are steroids and something called anti-TNF agents. So there we give either oral steroids or we give injectable steroids. And if the drug is, if the disease is not coming under control with steroids, oral drugs, or even IV steroids, then we give this anti-inflammatory injections, which we call as the immunomodulators, anti-TNF agents like infliximab, or there are other medications, adalimumab, and the many more products have come. And I'm not going to go into detail, but Dr. Sapan uses all these medications a lot. So many of you may be getting this kind of drugs, especially for joint pain, because they are very effective in this sort of disorder. And that is it about the treatment. Many a times patients, they ask me what sort of diet, and another thing. So this is to control the disease, which is active disease. But this disease has something called relapses and remissions. So in relapse, the patient will have all these symptoms, what I told you. But once the disease comes under control, we call it as a remission. But to keep the patient into remission, meaning that to keep the disease calm, we have to give certain medications like azathioprine, and also this anti-TNF agent and other drugs also can keep the disease calm. So this is what is about the disease. So my questions from the patients, and I know what questions. The first question they ask is what sort of food they can take, and I tell my patients you can take everything except for two things when the disease is too much, when it is severe. One is milk, because two things: milk can cause more diarrhea, and second thing is milk has a casein. And these inflammatory bowel disorder patients, many of them, they have casein allergy. That's why they cannot take milk when the disease is active, meaning that when the patient has too much of diarrhea. But when the disease comes under control, they can take milk. Second thing is, can they take spicy food? Again, in active disease, they cannot take spicy food, but otherwise they cannot take normal food. They should be avoiding outside food, because this disease can have relapse because of three things. One is infection. So if you've taken food outside and you get infection, the disease flares up. Second one is painkiller. So if someone has diclofenac or something like that, those medications, patient will have flare up. And third one is stressful period. So if these patients, they undergo a stressful period, they can have relapse. So I always tell, eat home food, eat well-cooked food, you will not have any problem. Otherwise, you can take anything and everything. Another thing is, what about fiber? You can take fiber, but not in significantly active disease. But otherwise also we give fiber to this patient, because when the disease comes under control, many of them, they get constipation, not diarrhea. And then we give isabgol, which is the best fiber, I think. Then the young female has this disease, and they will ask me, can we get married? Yes, of course you can get married. Can we have children? Yes, of course you can have children. Can we continue with this medication, what we call a mesalamine and azathioprine, when the pregnancy is there? Yes, you can continue those medications. And you are not alone. There are millions and millions of people
who have this disease and they have children. They have children without any problem. They had pregnancy without any problem. The other question they ask me is, what are my chances of having cancer? Compared to normal population, a patient of inflammatory bowel disorder can have a higher chance of cancer, but it is not so much that you need to worry. So it's there, but it is not so much that we need to worry. But only thing is, after 8 to 10 years of the disease, we ask our patients to undergo colonoscopy to see whether they have cancer or not. So this is what is about these two diseases. I can take questions in question answer session. Sapan, it is up to you now. Okay. Thank you. But before anyone else has a question, I'm sure Ami has the list of questions that she sent. I have this question because about the use of NSAIDs or COXIBs for patients with IBD. Since we get not infrequently, I've had patients of ankylosing whom Nilev has only diagnosed as IBD because. And what I learned from him, you have read from textbook, but sharing experience with him, I learned that the way to ask about that is ankylosing spondylitis patients getting unexplained weight loss, number one, getting oral ulcers, recurrent attacks of red eye, and sometimes anemia, as he said. And sometimes they only have anemia. So that is when you actually suspect Crohn's and colitis. And very often he has diagnosed Crohn's for my patient with ankylosing spondylitis. So the question was that since they have ankylosing and they need NSAIDs and COXIBs, while I know that none of them is absolutely safe, which do you think is okay to give? Because patients yeah. So painkiller for these joints either is paracetamol, but it's a very weak analgesic. The other thing is COXIB. Itracoxib is the drug which we all give because it has shown efficacy as well as less side effect. We used to give a lot of indomethacin, which we don't give nowadays, but indomethacin has anti-inflammatory activity as well as some analgesic activity. So that also can be tried. Simple. Precisely, if there is colitis or Crohn's, so I think it is better to give Itracoxib. That is what I tell them, and that is what I learned from Nilevi when he was around. So that was my question. So Itracoxib can be safely taken. That might be going on for many patients, so they would. So now, Ami, it's up to you to ask whatever questions you want. So all the gastro part and intestinal part, Nilevi is there to answer, and I'll take care of if there are any joint questions related to joint, not joint questions. First question, Nilay sir, is that how to identify the pain, the inflammatory pain and other pains in the stomach? Yeah. So it's a very long question. The answer is very long, but we normally ask patient what sort of pain you have. Intestinal pain is a colicky pain. Normally, intestinal lining, which we call as mucosa, does not have pain sensation. But when intestines either get distended or they go into contraction, mean spasm, they get pain. So it's like Barrow kind of. So pain is either because of the distension or contraction. So when it gets distended, patient gets bloated feeling. When it goes into spasm, patient gets colicky pain, and it comes and goes. So this is very classical of a tubular structure like intestine. This is how the pain comes. Now, as I told you, ulcerative colitis involves large intestine, mainly the lower part of large intestine. So suppose lower part of the large intestine, what we call as sphygmoid colon, which is the lowermost part of the colon with rectum. So if it is involved, then lower part of the intestine is involved and people get cramps. So when you get these cramps, it is intestinal pain. When you eat and you feel heavy, it is stomach pain. So it depends on the site, also the character. Then you have to see whether the pain is always there, like cancer pain is always there, dull aching pain. So is the pain always there or the pain comes and goes? And intestine, ureter, which are the tubular structure, they have the pain which comes and goes. Right. Sir, next question है कि डायरिया और abdominal pain ankylosing spondylitis से related है? Diarrhea, anybody can get it, patient with or without ankylosing spondylosis. But when it becomes chronic, means when the diarrhea is for more than 1 month,
or it has red signs, meaning that patient has diarrhea with blood, diarrhea with fever, then it gains importance, and then you have to rule out ulcerative colitis or Crohn's disease. Otherwise, like non-eng spond patients, even these patients can get diarrhea and fever with food poisoning. But this is associated with vomiting, associated with fever. The diarrhea is of 2-3 days. So it is not all diarrhea and eng spond is inflammatory bowel disorders. So there is no need to panic. They are normal people, and normal people can get food poisoning and diarrhea and pain. Right. Sir, if patient को stomach pain है, ulcerative colitis है patient को, and immediate severe pain, the severe pain हो रहा है, and the patient has taken medicine also, फिर भी pain continue हो रहा है. But कहाँ pain हो रहा है? पेट में? हाँ, stomach में. So what is he supposed to do immediately? No, he has to see a doctor, because see, आपको pain है और आपने पेन किलर लिया हुआ है, फिर भी आपको पेन परसिस्ट हुआ है, then this pain could be anything. ये पेन नॉर्मल पेन भी हो सकता है, लेकिन पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है. जैसे हम जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स की जो दवाई देते हैं, वो मिसेलेमाइन और एजोथाइप्रिन, दोनों से पेनक्रेटाइटिस हो सकता है. तो अगर मेरे पेशेंट ये दोनों दवाई पे है, पेन हुआ और पेन किलर लिया, लेकिन 3-4 घंटे में नहीं सबसाइड हुआ, तो वो मेरे पास आते हैं. फिर मैं उनका सोनोग्राफी कराता हूँ, ब्लड की जांचें कराता हूँ, और फिर डिसाइड करता हूँ कि ये पेन नॉर्मल है या ये पेन का कोई प्रॉब्लम है. कभी कभार डिजीज बहुत बढ़ गया, उसकी वजह से भी पेन होता है. तो जो पेन किलर से नहीं कम हुआ, तो आई थिंक ही हैज टू गो टू द डॉक्टर. राइट. सर, चैट पे एक क्वेश्चन आया है, इज आईबीडी अ परमानेंट कंडीशन और कैन इट बी क्योर्ड? IBD cannot be cured, but it can be controlled and you can live a normal life. So just because you have IBD does not mean that you cannot lead a normal life. You can live a normal life, you can have children, you can have family, you can go out for holidays. You just have to take certain precautions. That's it. Yeah, right. So there is another patient, उनका question है, उनको ankylosing spondylitis past 8 years से है, and he is under treatment, medicines भी उनकी चल रही है, पर there was once उनको episode हुआ जहाँ उनको bleeding हुआ है stomach में. तो what care he should take कि ऐसा repeat नहीं हो दोबारा? पहले तो ये लोगों को bleeding क्यों हुआ? Most probably pain killer लिया, उसकी वजह से bleeding हुआ. So what sort of painkiller he has taken? As Dr. Sapan Bhai said, Etocoxib is the drug which should be given. You cannot take diclofenac and other drugs. Diclofenac is a very great drug in non-inflammatory bowel disorder, but it's not a good drug in our patients. अगर ऐसा दवाई लिया है तो फिर तो, और ब्लीडिंग चालू है, ब्लीडिंग बंद हो गया, ठीक है, ब्लीडिंग चालू है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एंडोस्कोपी करना पड़ता है. अभी हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गया, पेशेंट को स्टेबल है, तो फिर से ये दवाई नहीं लेनी चाहिए. लेकिन अगर ब्लीडिंग चालू है तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए कि ब्लीडिंग कहाँ से आ रहा है, स्टमक में से आ रहा है, इंटेस्टाइन में से आ रहा है, क्योंकि स्टमक में अल्सर हुआ तो भी ब्लीडिंग हो सकता है, या तो फिर पेन किलर लिया और जो अपना डिजीज था इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर वो फ्लायर अप हुआ, मींस डिजीज की इंटेंसिटी बढ़ी, उसमें अल्सर में से भी ब्लीडिंग हो सकता है. तो ब्लीडिंग चालू रहा तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए. बाकी पेन किलर एज फार एज अवॉइड, इफ रिक्वायर्ड टेक इट्रोकॉक्सी. राइट. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को रिसेंटली गैस्ट्राइटिस हुआ है, so he wants to understand from you कि what is gastritis and ankylosing spondylitis में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए उनको. आपका गैस्ट्राइटिस और हमारा गैस्ट्राइटिस अलग होता है. पेशेंट का गैस्ट्राइटिस वो गैस होता है, और हमारा गैस्ट्राइटिस स्टमक का इन्फ्लेमेशन होता है. जो गैस होता है काफी रीजन से बनता है. बेसिकली गैस इज अ नॉर्मल थिंग. Whenever the energy is produced with chemical reaction, gas is produced. So everybody gets it. It's not an abnormal thing. It's just some people are more sensitive to gas, or some people they form more gas, and that's where the problem starts. Like, if you are more sensitive to gas, you have to reduce your sensitivity, and intestinal sensitivity is directly related to your brain sensitivity. Those guys who are more sensitive, they
worry a lot, they think a lot, they get more gas. तो थोड़ा worry कम करना है. फिर certain diets है वो gas ज्यादा बनाते हैं. जैसे potatoes है, sugar है, cabbage है, कच्ची चीज है, वो सब गैस ज्यादा बनाती है. So आप लोगों को गैस ज्यादा है तो you have to avoid those substances. Then you have to do exercise, lead a good life, you know. So good nutritious fresh fruits and food, and also if you exercise your gas will go down. और एंग्स पॉन्ड और गैस के साथ कोई संबंध नहीं है. गैस नॉर्मल लोगों को भी बहुत होता है. हमारे अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं, 10 पेशेंट आते हैं तो 2 पेशेंट गैस की कंप्लेंट के साथ आते हैं. और हाँ, गैस का एक मेन रीजन कॉन्स्टिपेशन होता है, जो काफी बार पेशेंट नहीं बताते हैं, हमें पूछना पड़ता है और फिर हमें पता चलता है. वो तो बोलते हैं नहीं, मैं तो 3-4 बार लेटरिन जाता हूँ. लेकिन 3-4 बार लेटरिन आया, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप एक बार में पेट साफ नहीं कर सकते. इट्स एन इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन. सो व्हेनेवर patient has incomplete evacuation, he would be going to pass stools for 3-4 times a day, but it is not diarrhea, it is constipation. And of course in certain diarrhea also patient gets gas, but most of the times gas is a very benign thing. It doesn't have any consequences. We just have to do change in lifestyle and change in our sensitivity, diet and exercise. Right. Sir, there is another question. IBD में रेगुलर ब्लोटिंग होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग जो रहने ही वाला है? एक्चुअली ग्लूटीन क्या है? ग्लूटीन है, व्हीट में आता है, एक सब्सटेंस है. अपना जो काफी लोग होता है उसको ग्लूटीन की एलर्जी होती है, जिसको हम सीलियाक डिजीज बोलते हैं. तो ये लोग व्हीट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उन्होंने व्हीट लिया तो डायरिया होगा. उनका बच्चा है, उसको ग्लूटीन हाइपर सेंसिटिविटी है, ग्लूटीन की एलर्जी है, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसका हीमोग्लोबिन कम रहेगा, एनीमिया रहेगा. इनफैक्ट छोटा बच्चा अगर एनीमिया के साथ आता है तो हम हर बार सीलियाक डिजीज, ग्लूटीन एलर्जी की लिए हम देखते हैं. तो ये डिफरेंट डिजीज है. यस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर वाले को नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा सीलियाक डिजीज होने की संभावना रहती है. तो उसमें खाली एक सिंपल ब्लड का टेस्ट है, उससे उसका डायग्नोसिस होता है, जिसको हम टीटीजी बोलते हैं. वो हुआ तो पेशेंट हैज टू अवॉइड व्हीट. Now they don't have wheat allergy and फिर भी वो लोग व्हीट नहीं खा सकते. तो ऐसा कई लोगों को होता है. उसका रीजन ये होता है कि व्हीट डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होता है. तो अगर आपने अभी रिलैप्स हुआ है, आपको अभी फ्लेयर अप हुआ था, अभी आपका डिजीज आगे बढ़ा हुआ था, फिर आप व्हीट थोड़ा दिन के लिए नहीं ले सकते, तो ये नॉर्मल चीज, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. राइट सर, इसके कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है दैट इफ द पेशेंट इज हैविंग स्टमक अल्सर्स, तो वो सार फूड खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ज्यादा तो देखो, मैं हर एक बार पेशेंट को बोलता हूँ कि आप कुछ भी खा सकते हैं, नॉर्मल अपना जो खुराक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कोई भी चीज, नॉर्मल चीज भी अगर आपने बहुत ज्यादा ले लिया तो उसको हम गुजराती में अतिरेक बोलते हैं. अगर ऐसा किया तो इट्स नॉट गुड. इवन नॉर्मल डाइट इन एक्सेस इज नॉट गुड. राइट सर, तो ये स्टमक अल्सर्स हुए हैं तो व्हाट इज द पेशेंट सपोज टू टेक केयर ऑफ? स्टमक अल्सर, पहले तो स्टमक अल्सर मेडिसिन ऐसे नहीं होते. आपको थोड़ा मेडिसिन ऑलरेडी, पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग मेडिसिन्स, तो पैरेंटली घर पे क्या टेक केयर करती है? पेन किलर नहीं लेना है, नॉर्मल टाइम पे खाना है, एडिक्वेट स्लीप लेना है, और ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, ज्यादा ऑयली नहीं खाना है. घी इज फाइन बट ऑयल इज नॉट फाइन. बस इतना ध्यान रखना है. राइट सर, चैट पे क्वेश्चन आया है दैट आईबीडी में ब्लोटिंग होता है तो वो रेगुलर ब्लोटिंग हो रहा है पेशेंट को, तो वो कंटिन्यूअस रहने वाला है उनको? हाँ, नहीं, वो आईबीडी के हिसाब से ब्लोटिंग नहीं है. आईबीडी आपका शांत है, लेकिन काफी आईबीडी वाले को आईबीएस सिम्टम्स रहते हैं. जैसे इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें ब्लोटिंग होता है. और वो गैस, जो मैंने गैस के बारे में बोला, वो सब ब्लोटिंग के बारे में सही है. तो जो मैंने गैस के बारे में जो कहा, वही सब ब्लोटिंग के बारे में आपको करना है. राइट sir, I'll just interrupt here. Can you explain a bit about the difference between IBS and IBD, because even some doctors are confused, but at least yeah. That was my next question. Yeah, this is very important because many times our doctors only say IBS instead of IBD. So what I spoke for so many minutes was inflammatory bowel disorder. So it was about IBD. IBS is irritable bowel syndrome.
where the bowels are irritable, meaning that they are normal, they don't have any ulcer, but something happens, and we think that the chemical substances in intestine, they change, and that's why the intestines become more sensitive, and thereby they get these symptoms. So what symptoms do they get? Either they get constipation, or they get diarrhea, they get bloating, or they get colicky pain. But they don't have red flag signs, meaning that they don't have blood in the stools, they don't run fever, they don't have weight loss, they don't have appetite loss. These are the red flag signs. So if the red flag signs are there, I cannot make a diagnosis of IBS, that is irritable bowel syndrome, straight away. I have to rule out inflammatory bowel disorder, because sometimes you think it is irritable bowel syndrome, but you do an endoscopy, you find ulcers. So basically it is not an IBS, but inflammatory bowel disorder. So everything has to be normal except for the symptoms in irritable bowel syndrome, while you have pathology in the intestine in inflammatory bowel disorder. Right. Sir, related to this only, there was a question. There is a patient, उनको urine में 2-3 times blood pass on हुआ है, and he is having IBD, and he is a Angstrom patient. So I think due to medicines या कुछ he is saying कि ऐसा कुछ नहीं, ये मेडिकेशन से नहीं होता है, ये आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपको सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम है, ऊपर स्टोन है कि नहीं. कभी कभार Crohn's disease just presents with blood in the urine, but this is a very rare thing. I have seen only 2 patients. So but otherwise inflammatory bowel disorder की दवाई से यूरिन में ब्लड नहीं आता है, या डिजीज से यूरिन में ब्लड नहीं आता है, ये सेपरेट प्रॉब्लम है. और अगर आपको ब्लड आ रहा है तो आपको उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए. एक IgA nephropathy करके एक डिसऑर्डर भी that can happen because of any drug. Yeah. वो हो सकता है. So as he says, they should see their doctor and investigate it. Right. Sir, there is another patient. उनको दोनों है, ankylosing spondylitis है, and he is facing IBD. तो family में heart problem है. तो will it pass on to him? Not because of inflammatory bowel disorder, but heart disease can have family history, and also something like triglycerides ज़्यादा है, या काफी हार्ड डिसलिपिडेमिया है, कोलेस्ट्रॉल बराबर नहीं है, या फिर डायबिटीज है. ये सब चीज फैमिली में रन होती है. तो अगर ये सब चीज है तो उसका हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना बढ़ती है. लेकिन उनको खाली एंगस्पॉन्ड है या आईबीडी है, उसकी वजह से उसकी संभावना बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता. Just like to add here, ankylosing में बहुत rarely conduction disturbances heart में होते हैं. So that is number 1, and number 2 is कि ankylosing spondylitis और सारे inflammatory disease को control करना इसलिए आवश्यक है कि one of the long term complications of uncontrolled inflammation, मतलब अगर आपने आपका disease control में नहीं रखा है, is getting atherosclerosis, मतलब जो आपकी arteries है उसमें वो जमा हो जाता है, and you can get a heart disease because of that. So that is why it is very important. कई बार मरीज बोलते हैं सर मुझे पेन ही नहीं है, कुछ पेशेंट्स का ankylosing में, IBD का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ankylosing में उनका ESR भी बहुत हाई होता है, लेकिन उनको ज्यादा पेन नहीं होता है, तो वो बोलते हैं हम क्यों ट्रीटमेंट लें. सो वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज अगर आपका CRP इतना हाई रह रहा है and it is uncontrolled, then after many years you might land up with a complication of uncontrolled inflammation. इसलिए इन सब को कंट्रोल करना जरूरी है. So that can result in but the commoner things are what Nilay said, triglycerides and those kind of things. Right, sir. So there is another question that अगर पेशेंट को ankylosing spondylitis है तो 100% IBD होने ही वाला है, because that's a very generic question जो across हमको आया है. ये डॉक्टर सरपन आंसर देगा, मेरे हिसाब से तो बहुत कम लोगों को होता है. नहीं, सो IBD एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स का अगर आप कोरोनोस्कोपी करो सबका, तो आपको 50 या 60 में छाले तो मिल जाएंगे. यू गेट अल्सर्स, दैट इज वेरी वेल नोन. सो दैट इज व्हाई यू डोंट डू एंडोस्कोपी इन एवरीवन और कोलोनोस्कोपी इन एवरीवन. लेकिन अगर आप सिम्टम्स के हिसाब से जाओ और जो उन्होंने बोला डेफिनेशन के हिसाब से जाओ, तो आई थिंक अबाउट 10-20% कैन इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन, 100 में से कैन गेट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. एंड कुछ लोगों को पहले IBD होता है और बाद में एंकिलोजिंग होता है, ऐसा कम देखा जाता है. लेकिन
रफली 10 साल में 5 या 10% को क्रॉस डिजीज इवॉल्व हो सकता है इतने सालों में। But और not- जो not more than that. हाँ, और जो कोलोनोस्कोपी में जो अल्सर हम देखते हैं ना, मेनली छोटी आंत में देखते हैं, टर्मिनल इलियम में देखते हैं, और ये 13 to 14% नॉर्मल पॉपुलेशन में भी देखे जाते हैं। बट अगर मेरा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, उसको कुछ नहीं है, तो मैं उसका स्कोप नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि 4-5 अल्सर तो डेफिनेटली मुझे दिखेंगे, फिर मैं उसको इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस नहीं करने वाला हूँ उसके ऊपर। Right. So there is a female, she's 24 years old. उनको ankylosing spondylitis past 3 years से है, and now she is planning to conceive. So during आप पहले जैसे बता रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है प्रेगनेंसी में, but her question is that what care she has to take कि IBD का प्रॉब्लम भी नहीं आए और ankylosing spondylitis कंट्रोल में रहे। देखो, अगर आपका आईबीडी कंट्रोल में नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहिए। 3 से 6 महीना डिजीज रेमिशन में रहना चाहिए, मींस शांत रहना चाहिए, फिर ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका डिजीज एक्टिव है और आपने प्रेगनेंसी प्लान किया तो प्रेगनेंसी से आपका डिजीज और बढ़ सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका आईबीडी कंट्रोल में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका आईबीडी कंट्रोल में है तो प्रेगनेंसी ले कर सकते, हाँ कर सकते। उससे आपको कुछ प्रॉब्लम है या थोड़ा उनसे आईबीडी रिलैप्स, प्रेगनेंसी से आईबीडी रिलैप्स का थोड़ा चांसेस रहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा चांसेस नहीं है कि इसके हिसाब से आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। तीसरा, बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि नहीं, आईबीडी में जो कोई दवाई होती है उसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन कम हो सकता है, वो भी बहुत कम परसेंटेज में है, उसको हम IUGR बोलते हैं, बराबर। बट मोर और लेस प्रेगनेंसी और आईबीडी में इतना खतरा नहीं है, करना चाहिए। बाकी ऐसा आईबीडी में प्रेगनेंसी किया इसलिए बच्चे को कोई कंजेनाइटल डिजीज हुआ या जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, ऐसा कुछ नहीं। Right. So there is a next question. Patient को 2.5 years से ankylosing spondylitis है and he is on infliximab. But उनको हाँ infliximab. तो but there is some onset of IBD अभी recently और tuberculosis detect हुआ है. So how is it? नहीं, इन्फ्लिक्सिमैब पे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इनफैक्ट जब इन्फ्लिक्सिमैब पे पेशेंट है और पेशेंट को फीवर आने लगता है तो हम ट्यूबरकुलोसिस देखने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ट्यूबरकुलोसिस लिम्फ नोड में होता है, कभी कभार लंग में नहीं होता है पर लिम्फ नोड में होता है, और वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में नहीं पता चलता है तो हम CT स्कैन कराते हैं। इसका रीजन ये है कि एक चीज है उसको हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, मींस वो ट्यूबरकुलोसिस शांत पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम इन्फ्लिक्सिमैब देते हैं तो जो शांत पड़ा हुआ ट्यूबरकुलोसिस है वो फिर से जागृत होता है और उसकी वजह से ये टीबी होता है। तो जब भी इन्फ्लिक्सिमैब वाले पेशेंट को फीवर आना चालू हो गया तो हम डेफिनेटली टीबी के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं और टीबी पाया गया तो हमें उसकी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। So is it possible कि पेशेंट को टीबी नहीं हो? नहीं है, इसके लिए हम जब इन्फ्लिक्सिमैब चालू करते हैं तब लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए देखते हैं। उसमें MONT2 टेस्ट करते हैं, वो स्किन का जो टेस्ट करते हैं, दूसरा एक इकरा करके टेस्ट है, वो टीबी गोल्ड बोलते हैं उसको, वो टेस्ट करते हैं और एक्सरे टेस्ट करते हैं। अगर उसके बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं भैया इसमें कोई टीबी, लेटेंट टीबी का कोई चांसेस नहीं है, तो हम ऐसे ही चालू कर देते हैं। अगर हमें लगा कि इसमें लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो हम टीबी की 2 दवाई चालू करते हैं, INH और रिफाम्पिसिन, और वो 6 महीना देते हैं। राइट। सब पेशेंट को IBD है, व्हाट आर द चांसेस के उनको कैंसर हो सकता है? वो मैंने डिस्कस कर लिया है ना, वो कैंसर का बात कि थोड़ा चांसेस ज्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन से, इसलिए 8 से 10 साल की जब डिजीज होती है तो उसके बाद हम हर 2 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि डरना चाहिए। Her mother is also having breast cancer. The female who has asked the question. So नहीं, वो उसका कोई एसोसिएशन नहीं है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के साथ एसोसिएशन है बिकॉज समथिंग कॉल्ड ब्रेका जीन। बाकी इंटेस्टिनल अल्सर के साथ इतना कोई संबंध नहीं है। राइट।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को स्टमक में ब्लिस्टर्स हुए हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 month और हेड एंड हैंड्स एंड लेग्स एकदम कोल्ड हो जाते हैं. सो व्हाट इज द रीजन, वो क्यों हो रहा होगा? नहीं, वो मैं बता नहीं सकता. Medicines in 1 day. He has written that. He's taking 13 medicines. Nilevi means that many times, but they have to document the blood pressure. जैसे हमारे पेशेंट में कई बार लो बीपी तो 50% लोगों को होता है. अब लो बीपी जैसा कुछ होता ही नहीं है, right? So you have to get yourself measured, and there is a range of blood pressure. So many times when they say low BP, there's actually nothing like that. So number one, how they, the best thing is get blood pressure measure करवाओ, and if your family doctor says this is something, then you can get it investigated for, right? Right. Nilay sir, what is the care what patients have to take at home? Inflammatory bowel disease ho to they have to live a normal life. They have to live a normal life, except 3 things I told you. Diet, they can take anything and everything, but it has to be cooked food. They should not get infection from the food. Number 1. Number 2 is painkiller. You have to take only certain painkillers. You cannot take any painkiller otherwise. Number 3 is good disciplined life. Means आपने 2 बजे सोए या 4 बजे सोए और बराबर सोए नहीं, और हर रोज आपका डाइट का टाइम अलग अलग है, आप वो नहीं होना चाहिए. फिर स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आल्सो इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड रिलैप्स. Right. Sapan sir, what would you suggest our patients, angst-prone patients, that what care do they have to take? Most of the things what Nilevi said holds true for ankylosing, except for the fact कि ankylosing में एक वो जो आगे disability वाले होते हैं उनको generally problems होती हैं, I agree, and they lose occupations and those kind of. So number 1 is के these things have to be diagnosed early, and as we are seeing with the COVID epidemic also, I think we need to have a scientific temperament to everything. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा. जो विज्ञान से रिलेटेड बातें हैं वही माननी चाहिए. आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतना सारा आता है, स्पेशली कोविड में भी आप देख रहे हो. सो नंबर 1 इज डायग्नोजिंग अर्ली ऑल दीज थिंग्स. नीला भाई का अपॉइंटमेंट भी मुश्किल है, मेरा अपॉइंटमेंट मुश्किल है. सो यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर, डोंट डिसाइड ऑन योरसेल्फ आपको क्या है, कंप्लेन टू देम, एंड देन वी नॉर्मली ट्राई एंड टीच फैमिली डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस के ऐसा ऐसा, दे विल गाइड यू टू द स्पेशलिस्ट. अपने आप से आप टेस्ट वेस्ट ना करवाएं. And then, so diagnose early, that is number 1. आपको symptoms तो सारे share हो गए इसके. I don't think we have more clear-cut answers. जिस तरह नीलेबी ने एकदम clear answers दिए हैं, I think the very good answers to all the questions. So number 1 is diagnosing. Once you are diagnosed, then you have to follow up with your specialist regularly and take those medicines if they are needed. And if they are not needed, we only tell कि नहीं अब जरूरत नहीं है. But don't decide on yourself and lose on follow-up. या फिर बार-बार आप हर 15 दिन में फोन करके, जैसे अभी आजकल होता है उनमें तो हर हफ्ते में वो हम उनको बोल के कहते हैं कि भैया 3-4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन एवरी वीक दे लास्ट कि सर अभी तक फायदा नहीं हुआ. इट टेक्स टाइम. सो वो साइंटिफिकली सब बात को समझना, दैट इज नंबर 2. सो कंट्रोल ऑफ डिजीज, गोइंग टू द डॉक्टर रेगुलरली, गेटिंग इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे से ऑन द स्पेशलिस्ट. एंड नंबर 3, एज ही सेड वेरी राइटली, बेसिक थिंग्स इन लाइफ. जैसे क्रिकेट में नहीं कहते हो, आप द्रविड़ और उनको पूछोगे, द्रविड़ या विराट कोहली को, तो बोले यू जस्ट स्टिक टू बेसिक्स. एक्सरसाइज रेगुलरली, आप विटामिन डी के लिए इनफ सनलाइट लीजिए, आपके फूड हैबिट्स एकदम अच्छे होने चाहिए. मतलब at the age of 60, 70, 75 with cholesterol, you don't eat lots of pizzas. That is what we mean, and a lot of other things. If you eat, then you run yourself that much so that you lose those calories. So exercise regularly, diet, sleep, habits, and all those things. So I think these are 3 things which you need to do. Nothing magical and no rocket science. बस ये चीजें करो and you should be fine. और आइडिया ये है इन सब सिंपोजियम का, जैसे नीले मैंने बार-बार स्ट्रेस किया बहुत अच्छी तरह, you don't have to be scared. ये ऐसे कई सारे मरीज होते हैं, इनके सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं. IBD has a support group, so be a part of these support groups, share your problems with others, and you will live a reasonably normal life. I think there is nothing to panic about these things. Yeah, right. Nilay sir, thank you so much. Those were the questions which we have received from the patients. लास्ट में कुछ टेक होम मैसेज दे देना हो तो. Exactly, take home for all of us. No, I think we discussed everything. Take-home message. Number 1 is just because you have angst-prone does not mean it's the end of the life. Number 2, early pick up. Number 3, regular exercise. Number 4, certain precautions as we discussed. Even if you have inflammatory bowel disorder, again, it's not end of the road. Not
every inflammatory bowel disorder is severe enough to cause problems to the patient. Yes, they do get some relapses some other time, but they can be easily managed. Taking care of the basics is the most important thing. Enjoying a normal life is more important. So you should consider yourself as a normal person. You are not alone. There are millions and millions of people all around the world who have this problem. So let's not, be pessimist and say, okay, मेरे को तो ये अभी मैं क्या करूं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको कुछ नहीं है, आप नॉर्मल है और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करिए. Right. Thank you. Tapan sir, take home from you. नहीं बस मैंने बोल दिया जो नीलवी ने बोला वही कि just don't be scared and early diagnosis, treatment, scientific temperament, exercise. I think basic things जो नीलवी ने बोला वही. Absolutely. Nothing to be. Thank you, Sapan sir. Thank you, Nilay sir. Both of you. Thank you so much. Thank you. I think they were very clear answers. I also got to learn, although we've shared patients, but I got to learn quite a few things. So thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. All the participants, thank you for joining with us. Yeah. मैं chat पे feedback link भेज रही हूँ, so please आप सब fill कीजिए. And some participants have also wrote thank you very much.